Hello friends, I'm Dr. Arpit Khurana. Uh, Today's topic for discussion is game theory. Game theory. Now, this is one of the most interesting topic. In this topic, what we have two players, players A and players B. Let player A is what player A is Coca-Cola, and player B is what PepsiCo. Right? These are the two players in the market. Now, player A it has various strategies. Let's say A, B, C. These are the strategies of player B. Similarly, D, E, F, these are the strategies of player B. Right now, player A it has n number of strategies. Similarly, player B has n number of strategies. But what we have to do in this case, the question that will be given in this case would be like this: we would be given one matrix, right? And on the left side there would be written one player and this. So these are the two players X and Y, they are the two players, and 1 and 2, let's say these are the strategies of player A. On the similar lines 1 and 2, these are the strategies of player Y. Now on the left hand side these are the strategies of player X, and on the upper side these are the strategies of player Y. Now here it is written 2 3 4 5, let's say it is written here. Now the point that we have to do is, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू इन ईच रो। पहली रो में क्या मिनिमम वैल्यू आपको नजर आती है, दैट इज 2। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या नजर आती है, दैट इज 4। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट रो के अंदर, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट मिनिमम वैल्यू, राइट? And in the column you have to find out what, in the column you have to find out maximum value. So what you will do is, फर्स्ट कॉलम के अंदर, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इस केस के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 4। आप इसके आसपास क्या करो, एक स्क्वायर बना दो। सिमिलरली इसमें क्या है, 4 5, right? So these are the maximum values in case of column. Now in this case, since this value is common, so value of game, it comes out to be what, it comes out to be 4. And in case of probabilities, X will follow which strategy, X will follow second strategy, Y will follow what, first strategy. So you will write this X first and second strategy, and the probability of selection of first strategy is 0, whereas probability of selection of second strategy is 1. Similarly for Y, you will write down like this: Y 1 2, selection of first probability is 1 and selection of probability is 0. So this is the case of first case in which we get a common value, and this common value is known as what, this common value is known as saddle point, right? Now comes to second case in which there would not be any common value, right? ऐसे केसेस जहाँ पे कुछ कॉमन वैल्यू नहीं आती, उसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, उसके लिए फर्स्ट मेथड दैट वी अडॉप्टेड इज odds method, odds method, राइट? लेट्स से एक मैं क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज प्लेयर ए, दिस इज प्लेयर बी, first two, these are the strategies of player A, 1 2 3, these are the strategies of players B, right? And these are the values 4 20 6, these are the values given in this case 18 12 and 10. सो फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम वैल्यू इज 4, मैंने राउंड बना दिया। सेकंड के अंदर मिनिमम वैल्यू इज 10, मैंने राउंड बना दिया। फर्स्ट कॉलम के अंदर 18, सेकंड कॉलम के अंदर 20, देन अच्छा इसमें तो आ ही गया दिस, दिस इज द कॉमन वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ गेम इन दिस केस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ गेम इन दिस केस इज 10, राइट? इस केस में हमारे पास कॉमन वैल्यू आ जाती है 10, दैट इज नोन एज द सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। बट जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ दैट इज ऑड्स मेथड, उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, लेट्स से आपके पास वैल्यूज हैं, दिस इज द मैट्रिक्स गिवन टू यू, दिस इज द प्लेयर ए, दिस इज द प्लेयर बी, राइट? एंड फॉर प्लेयर ए first and 2, these are the two strategies, for player B these are the two strategies, and the values that are given in this case 5 1 3 and 4, right? So first in this first रो के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आई, 1, सेकंड के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आई, 3, फर्स्ट कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आई, 5, इसके अंदर क्या आई,
4. In this case, there is no saddle point, right? In this case, there is no saddle point. Now इसको solve करने का तरीका क्या है? What you have to do is, अब let's say, let me do like this. हाँ, now what you have to do is you have to find out differences. Differences in the sense 5 minus 1, you have to write it here, 4. 3 minus 1, you have to find out it's minus 1, but we have to ignore minus signs. So 3 minus 4, that comes out to be 1. Here 5 minus 3 is 2, 3, right? मैंने कुछ नहीं किया, I have just taken the differences in this case, right? Differences लेने के बाद आपको क्या करना है? You have to make the sum of these two values. 1 plus 4 क्या होता है? 5. 3 प्लस 2 क्या होता है? 5. नाउ ये जो 5 है, इट मस्ट बी सेम फॉर बोथ द केसेस. ऐसा नहीं होना चाहिए इनको मैं ऐड करूं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, इनको ऐड करूं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बोथ द केसेस सेम ही वैल्यू आनी चाहिए. अदरवाइज व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मेक सम मिस्टेक. नाउ इन द फर्स्ट केस, probability of selection of first strategy would be 1 upon 5, क्योंकि एक है आउट ऑफ कितने चांसेस? 5, तो probability comes out to be 1. In the second case is 4 upon 5. Then in this case is 3 upon 5. In this case is 2 upon 5. Now these are the probabilities of selection, राइट, ऑफ स्ट्रेटजीज. इफ आई टॉक अबाउट प्लेयर ए अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉलो करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आती है? 1/5 आती है. अगर वो सेकंड प्रोबेबिलिटी फॉलो करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 4/5 आती है. सिमिलरली अगर बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉलो करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है. सेकंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है. बट इन दिस केस वैल्यू ऑफ गेम किस तरह निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ गेम निकालने का तरीका क्या होता है? सुनो, 5 you have to multiply by 5 into 1. तो वैल्यू ऑफ गेम इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन व्हाट? अपॉन 1 प्लस 4, या जो ये सम आया है वही चीज. So it comes out to be 17 upon 5. So value of game in this case would be 17 upon 5. Right. So this is the first method, that is known as odds method. Right.